नमस्ते. सो फाइनली वी हैव रीच्ड डाइंग डिक्लेरेशन. अब नाउ दिल्ली मेंस के अंदर अगर आपको वो कॉन्सेप्चुअल बेसिकली फिक्शनल एक केस बनाते के दे देगा एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ढूंढेगा एंड इफ डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेंशन वी विल जस्ट मेंशन दी फॉलोइंग पॉइंट्स. पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान आसपास के स्टेट्स की जुडिशरी के मेंस एग्जाम में स्टैंडर्ड सेट क्वेश्चन ऑन डाइंग डिक्लेरेशन आएगा तो भी हमें सेम ही पॉइंटर्स देने. तो कृपया करके जस्ट मेक सम वेरी गुड नोट्स एंड सेट आउट एन आंसर इन स्टोन which is ready as soon as this question pops up in your mains ka paper, right? Now this is an exception to rule of hearsay evidence that it cannot be permitted. So in this case, if the hearsay evidence is of the nature of a dying declaration, we will allow it in a court of law. Now why is that the case? पहले सेक्शन देख लेते हैं. ओपन योर बैक टू 32 एंड देन 32 क्लॉज 1 सॉरी सबसेक्शन 1 स्पेसिफिकली एंड देन वो क्लॉज 1 बोलने की आदत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा के. बट 32 सबसेक्शन 1 तो यहाँ पर पहले जरा सेक्शन देख लेते हैं फिर देख लेते हैं क्यों डाइंग डिक्लेरेशन परमिट तो कर रहे हैं. सो व्हाई इज इट एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट हियरसे एविडेंस shall not be permitted? It's as simple as that. All right, now cases in which statement of relevant fact by a person who is dead or cannot be found etc is relevant. So now this section is going to detail out cases in which statements made by either a person who is now no more, does not exist on this planet, अपनी अंतरात्मा की यात्रा पे आगे चले गए हैं, or cannot be found, both of these scenarios, right? So we can't locate him but we will still allow this evidence in a court. So the Evidence Act, James Stephens, is basically allowing this to pass through his filter जो एक्वागार्ड है हमारी एविडेंस एक्ट, राइट? एविडेंस एक्ट क्या मेनली कि जी कोर्ट का टाइम बचे कि हर चीज़ मुद्दे में मुझे नहीं सुननी, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बेसिकली आपके जो लड़ाई जो चल रही है पूरा केस की जो बात जो चल रही है उसके अंदर आई ओनली वांट टू हियर द रेलेवेंट थिंग. सो हाफ ऑफ द almost half of the Evidence Act is dedicated to filtering out stuff. So it's like aquaguard. I always say it's like abhi tak to khair is course mein under our judiciary program you have heard this line many times. तो Evidence Act के काम में but ये filter जो act है it's allowing one sort of hearsay evidence to go through. That's dying declaration. All right, so now you need to figure out why is this such the case. Statements written or verbal. So prelims के लिए which kind of statements under dying declarations are permitted? Statement written or verbal. Write this down as an ingredient of the section. Of relevant facts made by a person who is dead. Pointer number 1. Please write this down. Who is dead? Who is dead? Or who cannot be found. Pointer number 2. Or who has become incapable of giving evidence. Pointer number 3. Or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant facts in the following cases. All right, so this is a prelims ka question कि किस की statement can be treated or can be allowed under 32. So पहला बंदा dead है, दूसरा cannot be found, तीसरा incapable of giving evidence, चौथा attendance cannot be procured and the delay and expense is way too much. All right, so their statements basically they are themselves relevant facts in the following cases. These statements they are relevant facts. तो अभी तक हम सारी obviously 5 से लेके 55 तक तो हम relevancy decide कर रहे हैं, right? When it relates to the cause of death. तो अगर वो statement is relating to the cause of death, when the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction, इसको जरा underline कर लीजिए और अपने notes में अलग mention कर लीजिए. सारा चक्कर जो सारे जो केस लॉ हैं कि whether a statement can be allowed as a relevant fact if it relates to circumstances of the transaction. Now this is a very this is a very broad thing. तो broad thing पे फिर हमें judicial interpretation चाहिए. It's as simple as that. Which resulted in his death in cases in which the cause of that person's death comes into question. तो या तो भैया डायरेक्टली वो आपको बता रहा है जी cause of the death कि जी इस आदमी ने मुझे मार दिया और उसके बाद मेरी नाक में रोई मुंह में घी और मैं गुजर गया. Correct. Or as to any of the circumstances of the transaction which resulted to his death कि अरे उसने मेरे पैसे लेने थे और सॉरी मैंने उससे पैसे लेने थे और फिर उसने मेरे को धमकाना शुरू करा एंड देन ये स्टेटमेंट आपको कहीं पे मिल गई एंड देन यू फाउंड द पर्सन टू बी डेड. नाउ दिस इज relevant, right? So this is detailing the circumstances of the transaction, right? So this will become relevant. Such statements are relevant whether the person who made them was or was not
at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of proceeding in which the cause of his death comes into question. तो यहाँ पे now this is a stark departure from the English law. तो यहाँ पे under expectation of death, English law में dying declarations are only allowed when there is no hope of life left in you. You are pretty much on your deathbed. But यहाँ पर was or was not at the time when they were made under expectation of death. कि जी मुझे डेथ की कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन मैं सच जो बेसिकली जो बता रहा हूँ उसको, जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, that will be treated as relevant fact. Let's cook up examples and then try to understand it. So circumstances under which they are allowed. Now you go to English law के अंदर, unlike English law is the position in English law is dependent upon the expectation of imminent death. Now that is the sine qua non in English law. लिख लीजिए, all of this has to be mentioned when you're talking about dying declarations. Only on deathbed that there is no hope of recovery under English law की situation में तभी ये statement allow होगी, right, as evidence in court. Now declaration must be made in the settled hopeless expectation of death कि जी ऐसा है जी अब मैं तो मरने ही वाला हूँ, right. तो लॉजिक क्या है, अब तो सच ही बोल रहा होगा, अगर हिंदी में बोले तो why will courts allow such a thing कि जी अब तो सच बोल ही रहा होगा, अब इसको झूठ बोलने का क्या इंसेंटिव है. लेकिन वो जो दे फॉरवर्ड कलयुग चल रहा है तो मिसयूज अभी भी कानून की तो होती, बट खैर एनीवे अब तो सच ही बोल रहा होगा. ये अंग्रेजों ने सोच रखा है कि जी ऐसा है, अब तो मतलब इसको पता है कि इसकी मृत्यु 15 मिनट बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, जब भी, एंड नाउ ही हैज नो होप ऑफ लाइफ कि अब तो मैं इस दुनिया पे नहीं रहने वाला, तो इसलिए अब तो सच बोल ही रहा होगा, तो इसकी बात मान लेते हैं ना, मान ले एज इन सच, तो हम डिसाइड करेंगे कि सच है कि नहीं. We treat it as a relevant fact, right? Relevancy to decide कर रहे हैं after all. So plus another departure from common law is Indian Evidence Act में civil and criminal both के अंदर ये काम हो रहा है, right? तो जी यहाँ पर 32 के अंदर अगर आप देखें तो please write it down that this applies to civil proceedings, criminal proceedings, both. English law में क्या है? It applies only to criminal proceedings. Civil में not allowed है, ठीक है जी. आगे चलते हैं. इट्स अंडर इंग्लिश लॉ ओनली इन होमिसाइड केसेस, जहाँ पे कहीं पे डेथ, भाई डेथ पे ही, जब डेथ पे ही बात हो रही है सारी. इंग्लिश वाला लॉ जो है, इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम बेसिकली गियर टुवर्ड्स डेथ ऑन दिस टॉपिक. नाउ रीजंस व्हाई विल हमारा जेम्स स्टीफन का एक्वागार्ड फिल्टर, व्हाई इज दिस बीइंग अलाउड? बिकॉज इट्स प्रीटी मच इन दैट सिनेरियो द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल, and the person that there is no motive left to lie, and you are basically face to face with your maker, right? अच्छा, मान लेते हैं, let us say that this was recorded on oath to magistrate. It can also be labeled as dying deposition, right? It doesn't matter to whom a dying declaration is made as long as conditions of the section are met. So it's not necessary कि magistrate ही चाहिए. It is an ideal scenario कि magistrate with a doctor's certificate हमें मिल जाए कि person was in a fit position to make that statement, and magistrate records, so obviously judicial authority के सामने record हो रहा है, so its veracity and its authenticity, so it becomes a much superior quality statement rather than just an ordinary dying declaration. अगर वो हो गया ठीक है, बट अगर नहीं भी हुआ तो भी काम चलता है. इट इज एब्सोल्युटली ओके. कंडीशंस स्टेटमेंट, अब उसने बोला जी कंडीशन ऑफ द सेक्शन आर मेट, सो कंडीशंस लिख लेते हैं. स्टेटमेंट कैन बी रिटन और वर्बल. देयर इज नो स्टैट्यूटरी फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, एज इन कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है एक्ट में कि डाइंग डिक्लेरेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड लाइक दिस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन मतलब डाइंग डिक्लेरेशन में द करेक्ट पर्सन एज इन मैजिस्ट्रेट कहाँ ढूंढ के लाएंगे? आदमी मर रहा है, कहाँ से आप ढूंढ के लाएंगे? मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वही फिर देयर कैन नॉट बी अ स्टैट्यूटरी फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग. कोई शेड्यूल नहीं, कोई फॉर्म नहीं किसी बेयर एक्ट में. नाउ डाइंग डिक्लेरेशन इज बेसिकली, इट हैज टू बी ट्रू, इट हैज टू बी वॉलंटरी एंड नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग और प्रॉम्प्टिंग. मान लेते हैं एक बदमाश आदमी ने LLB करी हुई है और उसको ये बात पता है, और वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बोल, अब तो तू मरने ही वाला है, ऐसे बोल, वो नॉट अलाउड है. वो तो फिर कोर्ट विल हैव टू लिंक अप द एंटायर चेन ऑफ इवेंट्स, एंड देन बेसिकली अगर आप अपने डिफेंस में यूज कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है टू प्रूव टू द कोर्ट कि नहीं नहीं यहाँ पे गड़बड़ है डाइंग डिक्लेरेशन में. सो डाइंग डिक्लेरेशन हैज टू बी ट्रू, वॉलंटरी एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग और प्रॉम्प्टिंग. दैट्स अप टू द कोर्ट टू चेक, राइट? It has to come from the mouth of the deceased person,
If recorded or dictated by someone else, then well, there is some doubt about its reliability. There is a case law जो हमने आगे भी करना है, that whether someone who cannot speak properly, या ऐसी कोई कंडीशन आ गई जिंदगी में जिससे वो बस वर्बल साइन से बता पा रहा है, well, whether that will be treated under verbal, the word verbal of dying declaration or not. Now, circumstances of transaction, write the case law down. Ranjit Singh versus State. So Ranjit Singh, basically यहाँ पे the Supreme Court held that letters written by a person 3 years before his death, in which letters के अंदर there were basically had recorded incidents of strained relations with his wife because of her having an affair with someone, her paramour. Well, they are admissible as relevant under 32 because they show the circumstances of transaction which led to his death. ठीक है जी, simple. ठीक है. Then we go to Pakala Narayan Swamy versus King Emperor. So this is appellant charged with murder, and statement by deceased to his wife on 20th March 1937 that he has received a letter to recover money, asking him to go to the house of the accused to receive money owed to him. And then his body was found deceased on 23rd of March, 3 दिन बाद. So it was held that under 32 subsection 1, the statement was rightly admitted. पहले भैया बीवी को बोल के 20 मार्च की मैं जा रहा हूँ उस मकान में, वो मेरे को बुला रहा है कि जो मेरे को पैसे बेसिकली इसने मेरे को देने हैं, और दे देगा पैसे, बड़ी खुशी की बात. Now that can be treated as a dying declaration. All right. Now, cause of person's death must be in question. So this has to be related to the person's death, right? So in Moti Singh versus State of UP, the accused was convicted on dying declaration of person, in which basically 2 gunshot wounds were there, but यहाँ पर dying declaration was given while deceased was in hospital, but he died after leaving the hospital. 20 days after leaving the hospital, he died. So this was held to be inadmissible under 32 subsection 1, that a dying declaration has to be complete is a separate pointer. But यहाँ पे अगर हम वापस आते हैं, so यहाँ पे cause of person's death must be in question. So in Moti Singh that was not really the case. He never really died after that, correct? वो तो चला गया, और उसके बाद फिर 20 दिन बाद अब किसी और चीज से गुजरा, तो we really are we are unable to connect death, whether that statement was connected to death, तो therefore इसलिए inadmissible कहा गई वहाँ पे. Now a dying declaration has to be complete. Let us say that a person is about to die, ऐसी शक्ल बन जाएगी, he stabbed me because ... रुक जाइए यहाँ पे, रुक जाइएगा, ठीक है जी. So that is inadmissible. भाई because पूरा तो कर दो, क्योंकि cause of death के साथ हमें वही चाहिए ना, वो कि अगर आपकी स्टेटमेंट मैं रेलेवेंट कंसिडर कर रहा हूँ, आई एम अलाउइंग इट थ्रू द एक्वागार्ड ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, भाई पूरी तो हो, जिससे पता तो चले कि आप गुजरे तो गुजरे क्यों, राइट? Now if it happens, if the person who's making the dying declaration happens to go on, survive and live, it may be treated as a statement under 164 CRPC. Pause the lecture here, open 164 CRPC, have a read through. जब भैया 161 164 CRPC आए इन लेक्चर्स में, आपका ये धर्म is something that you're born to do. Pause the lecture and check 161 164 CRPC. There is just no way out of it. The more you do it, the better that you'll become. ठीक है? It's not a dying declaration, but you can use it as corroborative evidence to corroborate other evidences on record. The expectation of immediate death is not a requirement under Indian law. So the cardinal case law is Kushal Rao versus State of Bombay. The appellant was convicted of murder only based on dying declaration. तो जहाँ पे भी ये काम होता है, so they challenge the dying declaration that you cannot convict us. So SC dismissed the appeal and laid down the following rules. Rules are certain guidelines. The provisions of, write this down, section 32 subsection 1 has been made by the legislature out of sheer necessity by way of exception that hearsay is no evidence, and evidence not tested by cross-examination is also no evidence. Now this is exception, is no evidence / not admissible. Now why will they have carved out such a section? So it is sheer necessity. The reason को जरा ले आते हैं वापस स्क्रीन पर. यहाँ पे reason चला गया हमारा, reason घूमते ही रहता है, ठीक है. Reason is that at such a time when one person is under the danger of losing his life, the person is not expected to tell lies. But कलयुग चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन but the ideal scenario is कि person is
not expect to tell lies, at least at this occasion. Secondly, the test of cross examination won't be available. अब भैया ऐसा है ना, कोई भी एविडेंस हम बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के तो काम तो करते नहीं, कोई भी स्टेटमेंट रादर, तो उसके अंदर अब वो तो अवेलेबल होना ही नहीं है, राइट? तो वी आर, दिस इज अ शेयर नेसेसिटी। अब सिचुएशन ही ऐसी है तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं कि साहब ने क्या बताया था अपनी डेथ के बारे में जस्ट बिफोर वो गुजरे, करेक्ट? तो अब जो बेसिकली जो जो गाइडलाइन या रूल्स जो उन्होंने खुशल राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, दैट इट कैन नॉट बी लेड डाउन एज एन एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ that a dying declaration cannot form the basis of conviction unless it is corroborated. So we cannot lay this proposition down. Each case will be judged on its own merit, each case as in each case of dying declaration. It cannot be laid down as a law that dying declaration is a weaker form of evidence than other evidences on record. It stands on the same footing as normal evidence because this is an exceptional sort of a case. And yeah, आपका जो magistrate, if has received the dying declaration on oath, it assumes a higher degree of quality and becomes superior than normal dying declarations. Then you can also quote this in your answer: truth sits upon the lips of dying men. This was said by Matthew Arnold. Right. But now this is open to misuse and this was acknowledged by James Stephen as well कि पंजाब में मतलब क्या ही हो रहा है, मैंने तो प्रोविजन या सेक्शन किसी और चक्कर में लिखा था और इन्होंने पता नहीं कैसे ये लोग यूज करना शुरू हो गए, राइट? सो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड आइडियली इफ मैजिस्ट्रेट इज अवेलेबल एंड डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल जाए इन विच द पेशेंट और द पर्सन हु हैज डाइड वाज इन अ कॉन्शियस एंड फिट डिसीजन, वो हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ना भी हो तो भी चलता है. दैट्स व्हाट वाज गिवन इन द केस. ऑलराइट, so now this is Sampath Bapso Kale versus State of Maharashtra. A dying declaration can alone lead to a conviction. भाई साहब मुबारक हो, ठीक है जी, ये काम आप देख लेंगे. फिर आगे चलते. Now declaration made by a person, as an injured person who survives, this is a statement of superior quality and of high degree rather than a statement made under 161. पॉज द लेक्चर, 161 देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर सीआरपीसी के अंदर, ठीक है जी. फिर वापस प्ले करिए और वापस आ जाइए. सो स्टेटमेंट जो आपने ऑर्डिनरी जो 161 के अंदर रिकॉर्ड कराई है उससे ज़्यादा हायर है, क्योंकि तब आपके दिमाग के अंदर तो था ना कि मैं गया, और अब अगर आप सर्वाइव कर गए तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि आप तो मेरे सामने खड़े हैं, हम आपसे पूछ लेंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं हुई थी, राइट? बट 161 से स्टेटमेंट की क्वालिटी जो है सुपीरियर हो जाएगी. क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड दैट यू वर इन व्हाइल यू मेड सच अ स्टेटमेंट, राइट? तो यहाँ पे एक और लिख लीजिए, डाइंग डिक्लेरेशंस एडमिसिबिलिटी इज बेस्ड / फाउंडेड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी. अब नेसेसिटी है भाई साहब, बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन हमें मिलेगा नहीं, बाद में तो आप ही नहीं मिलेंगे, राइट? और बाद में और हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इस टाइम तो सच बोल, अब तो सच बोल दो. वो जैसिका लाल वाली पिक्चर देखी थी कि अब तो छत से नीचे आ जाओ, और नौकर बेचारा झूठ में झूठ बोल रहा था, वकील साहब कहते हैं भाई साहब अब तो आ जाओ, अब इतनी क्या दिक्कत है, राइट? आई विल जस्ट चेक माय माइक. एनीवे, तो जजेस basically now dying declaration has to be judged and appreciated in light of surrounding circumstances, and a dying declaration is only ये क्या बोलते हैं admissible when you die. तो 32 के अंदर admit करा देंगे. well if you survive तो 150 157 और 155 CRPC नहीं, एविडेंस एक्ट. टाइम टू पॉज द लेक्चर 157 155 देख कर आइए. मैं तो ऑब्वियसली पहुंचूंगा इन सेक्शंस पे, आप अभी से देखना शुरू कर दीजिए. ऑब्वियसली आपने अपने सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है, बट 157 155 पे अभी ही नजर मारिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. दैट इफ यू सर्वाइव वी विल एडमिट दैट स्टेटमेंट ना 157 155. ठीक है जी, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द बेयर एक्ट. 167 सेक्शन ही तो है इस एक्ट में. नाउ इफ मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स एंड पर्सन डज नॉट डाई, देन विल कंसिडर द स्टेटमेंट एज वन रिकॉर्डेड अंडर 164 सीआरपीसी. सीआरपीसी का सेक्शन आया, पॉज करिए, दोबारा पढ़िए अपनी लिस्ट के अंदर बार बार. मैं रात को अगर 3 बजे भी उठा के पूछूं तो 161 164 सीआरपीसी. जुडिशरी के एस्पिरेंट है, बच्चे तो अब रहे नहीं, राइट? तो दिस इज हायर ग्रेड स्टफ देन योर एलएलबी एंट्रेंस. तो कृपया करके ऑल ऑफ दीज सेक्शंस हैव टू बी ऑन योर टिप्स एब्सोल्युटली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. ठीक है जी, तो ये काम करते हैं. अब जरा सेक्शन 10 के अंदर कॉन्स्पिरेसी कहाँ दी हुई है? 120 AIPC, राइट? कॉन्स्पिरेसी वगैरह वाले बात करते हैं. फिर देन अब जरा थोड़ा सा 55 की तरफ मूव आउट करने की सोचते हैं. लेट अस कवर आउट सेक्शन फ्रॉम 20 to 30, देन फिर आगे चलते हैं. डाइंग डिक्लेरेशन इज प्रीटी मच डन. एक एस्पेक्ट मैंने अभी नहीं डिस्कस करा है इसमें से, विच आई नो दैट आई हैव नॉट, इज मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन के केस में क्या होता है. सदबीर वर्सेस क्या स्टेट था वो मैं भूल गया हूँ, बट दैट्स 2010 का केस एंड दैट्स प्रीटी मच वेरी कोटेड इन ईच एंड एवरी मेंस एग्जाम.
आई विल डू अ सेपरेट लेक्चर ऑन मल्टीपल 9 डिक्लेरेशंस के अंदर क्या काम होता है, बिकॉज उस केस लॉ ही डिस्कस करना है और वो एक स्टैंडर्ड आंसर हमने वो भी बना के रखना है. तो बोथ ऑफ दीज लेक्चर्स विल देन कंबाइन इनटू वन, बेसिकली जो आपके नोट्स इसमें से निकलेंगे, देन यू विल राइट डाउन दैट आंसर. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, बिकॉज इन अ प्री रिकॉर्डेड ऑनलाइन फॉर्मेट दिस इज प्रीटी मच द बेस्ट अप्रोच दैट वी गेट आवर आंसर्स रेडी, ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी, मतलब प्रिपरेशन वर्सेज एन ऑफलाइन फॉर्मेट काम हो जाए. ऑलराइट, नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर, बाय.